Now, the main reason for the combination of acetyl CoA to take place was for the acetyl to be carried to the Krebs cycle. Now, if you observe, once the coenzyme has carried acetyl to the Krebs cycle, it is detaching. Can you all observe this? कि हमारे पास जैसे ही उसने एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाया उसने खुद डिटैच हो लिया because the sole function of the coenzyme A was to act as a carrier for that acetyl. Now, हमारे पास Krebs cycle is a cyclic process. That is हमारे पास किसी भी पॉइंट को हम एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. Let's say for a lot of people and for simplistic versions हम oxaloacetate को अपना start point लेता. And for a cycle to be completed, we need to come all the way back to our starting point. Now, if this is my starting point, हमारे पास oxaloacetate is a 4-carbon molecule. ठीक है? Now, can you guys tell me acetyl CoA में हमारे पास कितने carbons होता है? How many carbons are there in acetyl CoA? 2 carbons. So this oxaloacetate and this acetyl CoA would merge together. That is, CoA acetyl से detach हो जाएगा and the 4-carbon oxaloacetate would combine with this 2-carbon acetyl. So we had oxaloacetate, acetyl CoA from the link reaction enters the cycle and combines with the oxaloacetate to form a new thing which is a 6-carbon molecule. This 6-carbon molecule is known as citrate. So we started with a 4-carbon oxaloacetate. It combined with acetyl to form a 6-carbon molecule. Now, this 6-carbon molecule, yes. So हमारे पास basically respiration is a continuous process. मैं continuously breathing कर रही हूँ. Continuously मैं breathing कर रही हूँ तो मेरे पास oxygen जा रही है तमाम cells को. Oxygen is being provided to all the cells. So that means that all cells can aerobically respire as long as I have oxygen supply. So जितनी जब जब मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ब्रीथ इन ऑक्सीजन कर रही हूँ, मेरे तमाम सेल्स को ऑक्सीजन मिल रही है. जब जब मेरा हार्ट बीट कर रहा है, oxygenated blood is going to my cells. So because breathing and heart beating is a continuous process, respiration is also a continuous process. और हम जब बात करते हैं Krebs cycle की, so Krebs cycle is a cyclic process. तो हमारे पास Krebs cycle में जब एंटर करता है acetyl CoA, so oxaloacetate is already present in the matrix of the mitochondria. So because it is present in the matrix of the mitochondria, जब matrix में acetyl CoA बनता है link reaction में, so that acetyl CoA combines with the already existing oxaloacetate to form citrate, which is a 6-carbon compound. Is this clear? Perfect. So the oxaloacetate, which was already present, combines with the acetyl CoA from the link reaction to form citrate. Now, this citrate basically has to become an alpha keto glutarate. Now, the alpha keto glutarate is a 5-carbon atom. मुझे अगर एक 6-carbon atom से 6-carbon sugar से अगर मुझे एक 5-carbon sugar में जाना है, so what process is required? What should take place for the citrate, a 6-carbon molecule, to be converted into an alpha ketoglutarate? Very good. Decarboxylation. So decarboxylation takes place, and when decarboxylation takes place, हमारे पास क्या चीज produce होगी? Carbon dioxide produce होगी. So we would have carbon dioxide and decarboxylation जब भी होगी साथ में हमारे पास dehydrogenation भी हम ऑब्जर्व करते हैं. So dehydrogenation would also take place. So हमारे पास NAD plus would be converted into NADH, reduced NAD. Once the decarboxylation and dehydrogenation takes place, we have a molecule of alpha ketoglutarate.
नाउ अल्फा कीटोग्लूटरेट भी कंटिन्यूड नहीं रहता. Yes, you need to know the names of these compounds. And for those of, I would love to break this bubble. When you will come in university or you will be preparing for your MCAT, you would love this Krebs cycle because जो उस time पे पढ़ोगे Krebs cycle, that is a pain. It has like 10 other steps happening and like 7 other molecules. I remembered it with the our city is kept safe and sound from malice. So these are what? These are like 7 compounds or 10 compounds that no 7 compounds that come in the Krebs cycle. You guys have to memorize for your MCAT. So A levels वाली Krebs cycle तो बहुत आसान है उसके comparison में. So be thankful to Cambridge for making your life easier. अच्छा जी. So आपको सिर्फ 4 compounds याद करना है. Acetyl CoA, citrate, oxaloacetate, alpha ketoglutarate. Yes, राहिमा आपको पूरा glycolysis याद करना पड़ेगा for MCAT. Yes, unfortunately. Only Cambridge is nice. Anyways, yes, this is very, very easy. Yes, yes. So basically, your MCAT would be from your FSC. So FSC content is your MCAT. जो बेचारे FSC के बच्चों को खुद नहीं पता होता कि उनकी किताबों में ये content मौजूद है. खैर, very sad state of affairs of our country. Let's not go there. Come back to what Cambridge wants us to study. अच्छा जी. So हमने क्या किया था? We started off with oxaloacetate. तो कंबाइन हुआ था 2 कार्बन एसिटाइल से टू फॉर्म सिट्रेट. सिट्रेट से हम खुश नहीं थे. हमने कहा नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा है 6 कार्बन कॉम्पाउंड से. लेट्स मेक अ 5 कार्बन कॉम्पाउंड, जिसके लिए हमने रिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन करवाई. Now, between alpha ketoglutarate and oxaloacetate, there are 4 steps which would take place, जिनमें से हमारे पास एक तो बहुत आसान है. आप लोग प्रोडिक्ट कर दोगे 5 कार्बन से मुझे 4 कार्बन बनाना है. सो मैं क्या करूंगी? डिकार्बोक्सिलेशन करूंगी सिंपली. सो एक तो हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन होगी. इसको मैं सिंप्लीफाइड टर्म्स में डीसी लिख देती हूँ यहाँ पर, विच मीन्स कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है. फिर मेरे पास डिहाइड्रोजनेशन होगी. बट ओवर हियर डिहाइड्रोजनेशन 2 तरह की होती है. व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट टू oxaloacetate, we would be having 2 types of dehydrogenation. That is कि हमारे पास NAD को भी हम यूटिलाइज कर रहे होंगे और FAD को भी हम यूटिलाइज कर रहे होंगे. पूरे सिलेबस में, पूरी रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या कहते हैं, FAD सिर्फ एक जगह यूज हो रहा है. FAD का जिक्र सिर्फ एक जगह हो रहा है एंड दैट इज क्रेब्स साइकिल. सो क्रेब्स साइकिल में आपके पास हम FAD से FADH2 बना रहे होते हैं और हमारे पास हम NAD प्लस से NADH बना रहे होते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास ATP भी प्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पर एक एनर्जी रिच कॉम्पाउंड जो है वो ब्रेक करता है और जब वो ब्रेक करता है तो अपना फॉस्फेट जो है वो ADP को दे देता है, जिससे हमारे पास ATP बनता है. And now we are back to square one, to our starting point, that is oxaloacetate. Yes, Rahima, you have a question? मिस जो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला है, तो वी आई थिंक जस्ट रेड दिस एज 5 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस नेम. तो Yes, वी you डू can absolutely remember this as the 5 कार्बन unstable compound. Even with the citrate, अगर आप 6 कार्बन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. Oxaloacetate is something that you should know. But citrate, I would say याद कर लो because इस cycle का एक और नाम होता है. The Krebs cycle is also known as the citric acid cycle. So oxaloacetate, citrate और acetyl CoA जरूर याद रखो. अल्फा कीटो ग्लूटारेट को आप 5 कार्बन शुगर, सॉरी 5 कार्बन कॉम्पाउंड भी बुला सकते हो. That's perfectly fine. ओके मिस, थैंक यू. सिट्रेट इज आई थिंक इवन आस्क्ड फॉर इन द एग्जाम कि Yeah, क्या so है. oxaloacetate भी पूछते हैं और Krebs cycle का दूसरा नाम भी पूछते हैं, which is the citric acid cycle. अच्छा, ओके, थैंक anyone else who has any questions about Krebs cycle? So अगर हमारे पास 2 acetyl CoA थे, because हमारे पास 2 पायरुवेट बने थे ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे. 2 पायरुवेट से we had 2 acetyl CoA. यहाँ पे हमने सारी जो कहानी देखी है वो सिर्फ एक acetyl CoA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है. So if we are talking about 2 acetyl CoA, so everything becomes times 2 over here. So this means कि हमारे पास net yield क्या होगी? We have
4 कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज 2 कार्बन डाइऑक्साइड इस वाली डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोड्यूस हो रही है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड इस वाली डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोड्यूस हो रही है. So we have 4 CO2 being produced. Then we have 2 FADH2s. So 2 FADH2s. Then we have ATPs and अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी 2 NADH बनेंगे, so this would be 6 NADH. So this is our overall net yield. There is a reason because हमारे पास between alpha ketoglutarate and oxaloacetate, our city is kept safe and sound from malice. Between these two steps, I think so there are 4 steps. So alpha ketoglutarate और oxaloacetate के बीच में 4 या 5 steps exist करते हैं. 4 या 5 different compounds बन रहे होते हैं. Succinyl बन रहा होता है, succinate बन रहा होता है, fumarate बन रहा होता है, malate बन रहा होता है. ये सारी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. So ये जो 3, 4, 5, 6 reactions जो मैंने दिखाई हैं जिसमें ये सारी चीजें बन रही हैं, they are actually reactions that are taking place, different compounds that are being made. But you don't study this. You are not expected to know this. You guys are very lucky at this point to not know this. So there is a reason कि why FAD is coming or why ATP is being produced, but already इतने सारे reactions और इतने सारे नाम हैं. So you don't need to know those reactions. Please have mercy on yourselves. How does this cycle repeat? So this cycle is जैसे हमने बोला था पहले भी that continuously breathing हो रही है, continuously heart rate है, continuously oxygen supply है, continuous respiration हो रही होगी माइटोकॉन्ड्रिया में. So हमारे पास basically लिंक रिएक्शन से और एसिटाइल आ रहा है. ठीक है, और एसिटाइल आ रहा है तो ऑक्सैलो एसिटेट कंबाइन करके फिर से सिट्रेट बनाएगा, वो सिट्रेट फिर से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा, वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर से ऑक्सैलो एसिटेट बनाएगा. सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल व्हिच इज जस्ट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग. ये लूप चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है. ठीक है. मिस, तो ये जो 2 ATP रिलीज हो रहा है, इज दैट इन जस्ट वन साइकिल? बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ oxaloacetate we need to get 2 cycles done, right? हमारे पास 2 ATPs इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो हमने पूरी पहले की थी साइकिल पढ़ी थी वो हमने एक एसिटाइल को के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी ना. लिंक रिएक्शन से कितने एसिटाइल्स आ रहे हैं? 2 एसिटाइल्स आ रहे हैं, तो हर जो चीज बन रही थी हमारे पास वो टाइम्स 2 हो जाएगी. Yeah, that thing I got. I just mean कि we'll like if like one cycle के अंदर 2 बन रहे हैं, तो like it would be like technically 4, or we're just gonna talk about that 2, like एक ही cycle की बात ही करेंगे. वन साइकिल में हमारे पास अगर हो रही है, हमारे पास एक वक्त में एक साइकिल को अगर देखें हम इन सेक्लूजन, एक साइकिल जो हमने पढ़ी थी वो हमने किसके रिस्पेक्ट से पढ़ी थी? खाली एक एसिटाइल से ना. क्योंकि अगर हमारे पास 2 एसिटाइल आ रहे हैं, सॉरी, हमारे पास एक एसिटाइल अगर आएगा, एक एसिटाइल में 2 कार्बन है, राइट? जैसे इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड. एसिटाइल का मतलब ही यही है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन हैं. ठीक है. एक Hmm. एसिटाइल का मतलब है उस एसिटाइल में 2 कार्बन हैं. सो व्हेन वन एसिटाइल को एक कम्स एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसिटेट, तो मेरे पास सिट्रेट बनता है. आर यू गाइस विद मी ऑन दैट पेज, अमार एंड राहिमा? सो एक Hmm. एसिटाइल जब आता है तो मेरे पास एक एसिटाइल से ही साइकिल बनती है. हम जब साइकिल पढ़ रहे होते हैं ना कि ऑक्सैलो एसिटेट कंबाइन किया एसिटाइल्स और सिट्रेट बना, दैट इज 1 मोल ऑफ एसिड एसिटाइल दैट इज कमिंग इन. ठीक है. सो हमारे Hmm. पास एक साइकिल में एक एटीपी बन रहा है, बट लिंक रिएक्शन में कितने एसिटाइल्स बन रहे थे? तो एसिटाइल्स बन रहे थे. तो हम हर चीज को टाइम्स 2 कर देंगे बिकॉज वी नो कि लिंक रिएक्शन से क्योंकि 2 मोल्स ऑफ एटीपी, सॉरी, 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल आए थे. सो वट एवर इज हैपनिंग इन वन साइकिल आई जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर द ओवरऑल नेट yield. You can't find the third NADH. Wait, मेरे पास जो ये प्रोसेस होता है ना, आई थिंक सो यहाँ पर हमारे पास एक दफा, सॉरी, NADH बनेगा और हमारे पास एक और भी डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है. सो
Between alpha ketoglutarate and oxaloacetate, we have two dehydrogenation of NAD occurring. So this is two in one cycle. ठीक है? मैं फिर से इसको जरा क्लीन करके मैं जरा समझाती हूँ. I get the confusion where it's coming from. Let's remove all the times to. एक मिनट के लिए. ठीक है? When we are going from alpha ketoglutarate to oxaloacetate, हमारे पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, डीकार्बोक्सिलेशन से. फिर two NAD plus are converted into two reduced NADH. Then we have FAD going to FADH2, and we have ATP being produced. This is one cycle. अगर हम एक साइकिल, चलो हम एक साइकिल का लिखते हैं पहले और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं. इन वन साइकिल फ्रॉम वन एसिटाइल को ए क्या क्या बन रहा है? हमारे पास वन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वन कार्बन डाइऑक्साइड. That means we have two carbon dioxide in one cycle. Then हमारे पास, if we calculate the number of NADH, 1 and 2. So we have total 1 plus 2 NADH being produced. So in total we have 3 NADH. Then we have 1 FADH2 and 1 ATP. This is in one cycle from one acetyl. If I times 2 everything, so we would get how many things are getting produced from 2 moles of acetyl. Is it now clear? So हमारे पास 2 times 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, 3 times 2 6 NADH प्लस हो जाएंगे, 2 times 1 2 FADH2 and 2 times 1 2 ATP. Is this clear to all now? So एक साइकिल में एक एसिटाइल को यूज हो रहा होता है, बट बिकॉज वी नो दैट लिंक रिएक्शन से दो एसिटाइल को आ रहे हैं, तो हमारे पास एक लिंक रिएक्शन के नतीजे में 2 दफा क्रेब्स साइकिल होगी. सो हमारे पास इवेंचुअली एक साइकिल की जो यील्ड है उसको हम टाइम्स 2 कर देंगे, सो वी वुड नो हाउ मच टू एसिटाइल को आर मेकिंग. ठीक है? Anka, you had a question. Let me read. Yes, because there are two acetyl, we're doubling everything. Yes, that's it. I think so. Now it's clear to all. We basically covered glycolysis, link reaction, and the Krebs cycle. Let's quickly recap that so that we can progress towards the last and final stage of respiration, which is oxidative phosphorylation. So in glycolysis, we were starting with glucose, and the glucose was basically first phosphorylated. We were adding phosphate groups to this glucose molecule, and not only was it getting phosphorylated, but it also isomerized to form fructose 1,6 bisphosphate. This basically tells us that this hexose sugar has two phosphate groups attached at carbon 1 and carbon 6, which means there were two ATP molecules used for the process of phosphorylation. Now, this fructose 1,6 bisphosphate undergoes a lysis to form two molecules of triose phosphate. This triose phosphate then is then dehydrogenated to form 2 moles of pyruvate. And during this process, 2 moles of ATP are produced and 2 moles of NADH are formed. ठीक है, so हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप is phosphorylation in glycolysis. Then we have the lysis or splitting of fructose 1,6 bisphosphate, and then we have dehydrogenation. Now, this pyruvate then enters into the mitochondrial matrix. हमारे पास जो glycolysis का process होता है,
वो हमारे पास क्या कहते हैं, यस सॉरी, हमारे पास 1 mole ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ एटीपी, so times 2 makes it 4 ATP. थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग। अच्छा, हमारे पास this pyruvate which was produced at the end of glycolysis, which was occurring in the cytoplasm, enters the mitochondrial matrix, and यहाँ पर हमारे पास link reaction होता है। So in the link reaction, 2 moles of pyruvate undergo decarboxylation, so carbon dioxide is released, and whilst decarboxylation takes place, subsequently हमारे पास dehydrogenation भी हो रही होती है, जिसमें हमारे पास 2 moles of NADH are produced from 2 NAD plus. Pyruvate was a 3 carbon sugar. This 3 carbon sugar has undergone one decarboxylation, which means that one carbon atom is reduced. So it would become a 2 carbon compound, which is the acetyl group. These acetyl groups have 2 carbons in them. Now, acetyl cannot on its own enter into the next step. It cannot undergo or enter the Krebs cycle. It needs a carrier. That carrier is acetyl CoA. So we have, sorry, that carrier is the coenzyme A, which basically acts as the acetyl carrier. Very good, Ahmed. So acetyl combines with the coenzyme A to form acetyl CoA. Now, this acetyl CoA would enter the Krebs cycle. Now, हम जो starting point लेते हैं Krebs cycle का, that is oxaloacetate. Can you guys tell me how many carbons are present in oxaloacetate? Very good. So there are 4 carbons which are present in the oxaloacetate. So the oxaloacetate has 4 carbons. Now, this acetyl CoA is entering this Krebs cycle. It is combining with oxaloacetate. So we had a 4 carbon oxaloacetate, जिससे हमारे पास एक 2 carbon acetyl combine होगा. Now, mind you, हमारे पास basically the coenzyme drops the acetyl into the Krebs cycle and then it detaches. So जैसे ही हमारे पास acetyl को A Krebs cycle में enter करता है, जो coenzyme A है वो detach कर जाती है acetyl से, and the acetyl then combines with oxaloacetate to form, can you guys tell me कि हमारे पास 4 carbon और 2 carbon compound जब mix together करेगा तो क्या बनेगा? Very good. So we would form a 6 carbon citrate. So we would have a 6 carbon citrate over here. Now the 6 carbon citrate is converted into a 5 carbon compound, जिसको हम alpha keto glutarate बुलाते हैं. You do not have to know this name for your syllabus. Now, if we are forming, yes, it's also known as alpha keto glutaric acid. हमारे पास जो ये 5 carbon compound है, if we are going from a 6 carbon compound to a 5 carbon compound, हमारे पास क्या process हुआ होगा? हमारे पास decarboxylation का process हुआ होगा. So a carbon dioxide is released at this stage, and हमारे पास जब decarboxylation हो रही होती है तो हमारे पास dehydrogenation भी हम ऑब्जर्व करते हैं. So हमारे पास NAD plus से NADH बना होगा, right? So we have one carbon dioxide being released and we have NADH being formed. Now, this alpha keto glutarate then forms, it goes back to form the oxaloacetate. Now, for oxaloacetate to be reformed, definitely decarboxylation has to take place. So, one carbon dioxide is removed. Then, हमारे पास FADH2 is formed. From FAD, we have ATP being produced, and we have two NADH2s
be made as well. Now, if we add all of this up, we are observing two carbon dioxide moles being evolved, and we have 3 moles of NADH. We have 1 mole of FADH2 and 1 mole of ATP. This is from one single acetyl. However, we know that at the end of the link reaction, we had two acetyl being formed because हमारे पास क्या था हमारे पास दो pyruvates थी, so we would have two acetyl groups, which means we would have two acetyl CoAs at the end of link reaction. So अगर एक acetyl ग्रुप से हमारे पास two carbon dioxides, 3 NADH, 1 FADH2 and 1 ATP is being synthesized, we would simply multiply these values by 2 to get the overall yield, which would be 4 moles of carbon dioxide, 6 moles of NADH, 2 moles of FADH2, and 2 moles of ATP. So this is what we had done in yesterday's class. Are we all clear on this? Can we proceed to oxidative phosphorylation? Perfect. Okay. Now, हमारे पास this is what was formed at the end of Krebs cycle. And if we see what was produced at the end of लिंक रिएक्शन में एसिटाइल तो प्रेजेंट था बट वो एसिटाइल कहाँ एंटर कर गया था वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया था बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लिंक रिएक्शन की एसिटाइल कोए के अलावा क्या नेट यील्ड थी वी हैड 2 NADH and we had 2 moles of carbon dioxide. I'm writing the moles of NAD over here. 2 NADH. And if we talk about at the end of glycolysis, we had 2 moles of NADH at the end of glycolysis as well. So I'm going to add 2 moles of NADH. Now, abhi tak in these three processes, we have formed 10 moles of NADH and we have formed 2 moles of FADH2. Do you guys recall कि हमने किस तरह से NAD और FAD को define किया था? What was the definition or what was the significance of NAD and FAD? Do you guys recall that from yesterday's class? They were coenzymes, right? So NAD and NAD plus and FAD are coenzymes. Very good, Amar. They are coenzymes as well as they are hydrogen and electron carrier. हम इनको proton and electron carriers भी बुला सकते हैं. Now, अभी तक हमारे पास we have produced 10 moles of NADH and 2 moles of FADH2. These NADH and these FADH2s they're carrying protons and electrons.